Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the earth and its fundamentals. When we talk about earth this is lecture first of world geography. Earth is the third planet from sun and it is also called as blue planet. Blue planet means it has the abundant water. The solar system, when we talk about the origin of earth, it is actually the origin of our solar system. Our solar system includes the group of stars and planets. The group of stars and planets and about 63 moons and millions of small bodies like asteroids and comets constitute our solar system. When we talk about our earth, when we talk about the earth, it is the inner planet. We have 8 planets. This is sun. First one is Mercury, second one is Mercury, Venus, Earth and Mars. These 3 planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, these 4 planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are called as inner planets. So, Earth is an inner planet. Earth inner planet means this is Sun, and between this Sun on the outer side, this is Sun, and the outer side of Mars, on the outer side of Mars are the belt of asteroids. This is the belt of asteroid outside the Mars, and between the sun and the belt of asteroids the planets are called as inner planets, while as outside this asteroid belt are the planets, those planets are called as outer planets. And these inner planets are also called as terrestrial planets, means they are earth-like. Earth-like means they are made up of rocks and metals, or we can say they are made up of rocks and minerals. Inner planets are terrestrial, all Venus, Earth, Mars, while as the outer planets are called as Jovian planet, or we can say gas planet, because they are made up of gases, dense gases. So the outer planets are made up of gases, whereas the inner planets are made up of rocks and metals. So Earth is an inner metal, inner planet. So this is a brief about the solar system. Actually, we have to discuss about the Earth. So let us talk about the origin of Earth. When we talk about the origin of Earth, we have two theories: early theories and the modern theories. When we talk about the early theories, one of the important early theory is gaseous hypothesis by Emil Kant of 1755. According to this is actually the origin of Earth, that our Earth originates 4.6 billion years ago, and the one theory is about the origin of Earth is gaseous hypothesis by Emil Kant of 1775. According to this hypothesis, it says that some material, some hard material, we can say some hard particles, we can say, or some hard materials, we can say, were supernaturally formed. Supernature actually the divine formation. This theory is actually that by the supernature some hard particles were formed, and these hard particles कोलाइडेड विथ ईच अदर. ये जो हार्ड पार्टिकल्स हैं इन्होंने कोलाइड किया आपस में, एंड विद बाय द कोलिजन ऑफ दीज हार्ड पार्टिकल्स, इस कोलिज हार्ड पार्ट इन हार्ड पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से इनमें क्या हुआ, इनमें एक रोटेटरी, इनमें एक इन्होंने रोटेट करना शुरू किया, एंड दिस रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर system. This resulted the formation of our solar system, as it this resulted the formation of the earth. ठीक है दो. So the gaseous hypothesis or Emil Kant states that some particles, some hard particles were formed supernaturally, and these hard particles collided with each other, and by the collision of these particles, and the collision of these particles took place by the mutual gravitational attraction, and by the collision heat was generated, just by due to which
The original static and cold matter was converted into rotating nature. So जो ये स्टैटिक, ये जो हार्ड मटेरियल था स्टैटिक था, लेकिन जब ये टकरा गया, इस हीट इन्होंने लिबरेट की, इस हीट की लिबरेट से की वजह से ये रोटेट होने शुरू किए. दिस रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड दिस रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट अर्थ. सो अकॉर्डिंग टू द gaseous hypothesis, याद रखना कि some particles were supernaturally formed and these supernaturally particles collided with each other and they start rotating and resulted the formation of our solar system. ठीक है. This is, but this story failed because Immanuel Kant could not explain what was the how the particles, how the hard particles were formed by the supernature. What is the supernature? ठीक है, ये आए कहाँ से ये हार्ड पार्टिकल्स, बट दैट वाज नॉट एक्सप्लेनेड बाय द इमल कांट. सो दिस थ्योरी वाज discarded and the next theory came, that was nebular hypothesis by Laplace. And why this theory, that is nebular theory by hypothesis, states that nebular hypothesis of Laplace, it is in your NCERT book, it states that ओरिजिनली सन वॉज ए gaseous cloud. जो ये सन था, इट वॉज ए स्पाइनिंग क्लाउड ऑफ gases. दैट क्लाउड ऑफ gases वॉज कॉल्ड एज nebula. So there was a cloud of spining movement of gases. There was a gaseous cloud. That gases was called as nebula, and these gases were spining, and due to gravity and cooling of the gases gets contracted, and which forced gases to rotate faster. ये जो गैसेस फास्टर रोटेट होने शुरू हो गए, तो कुछ गैसेस बाहर आ गए. जब गैसेस बाहर आ गए, एंड दे फॉर्म द प्लैनेट्स एंड रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ solar system. Nebular hypothesis by Laplace of 1796 states that there was a gaseous cloud, spinning gaseous cloud. They were rotating. Some of the gases come out of the nebula and resulted the formation of our solar system. ठीक है. And third theory is tidal theory by James, and this is James and Jeffrey. This tidal hypothesis states that, see, according to James, this is also called as binary. We have this is a sun. According to this theory, we have a sun and we have a star. That star they called as intruding star. So we have a, according to theory by Jeans, and this is Jeans and Jeffrey. Jeans states that, or you can say James. Jeans states that in your book it is written as James. Sorry, it is written as James Jeans. It is actually James Jeans. This story was given by James and Jeans and Jeffrey. This Jeans states that it is full name is James Jeans, Sir James Jeans. Just James states that there's a sun, around a sun there's a star. That star is called as intruding star. This intruding star revolves around the sun into its orbit, into its path, but this path is tilting towards the sun. ये जो पाथ है, ये स्टार जब ये रोटेट करता है, ये इस सन के करीब आने लगा. एंड जब ये इस सन के करीब आने लगा, तो इट caused the gravitational force upon sun, and by the gravitational force some of the gases come out of the sun in the form of the filament, and these gases resulted the formation of our solar system. This was given by the James Jeans. It states that there is a sun in the center. Around the sun there is a moving star called as intruding star. This star causes the gravitational pull upon the sun and make the some gases out of the sun, and these gases result in the formation of our solar system. But what Jeffrey states that no, there was not only one sun. There was a sun, there was a star, that is intruding star, and there was another star called as companions, we can say companion star. There was a star called as companion star, and so this is sun, there is an intruding star, and around this intruding star is another star. This is intruding star, this is companion star. By the collision of this intruding star and the companion star resulted the formation of our solar system. So
Tidal theory states that by the collision of these, that is intruding star and the companion star, resulted the formation of our solar system, and this is the tidal hypothesis. And another hypothesis is supernova hypothesis that was given by Hole in 1946. It states that we have a sun and a companion star. Okay. This companion star, in the companion star there was a nuclear fusion and it resulted the burst. Due to nuclear fusion in the companion star, it exploded. The explosion of this of the explosion. So due to explosion of this companion star resulted the formation of our solar system. The companion star was consumed and it collapsed and exploded violently due to the process of nuclear fusion, and this companion star was called as supernova. कभी आ सकता है supernova is, it is a companion star and in which nuclear fusion resulted the explosion of it, which resulted the formation of the solar system. And another hypothesis, that is interstellar dust hypothesis by Otto Schmidt. It states that in our universe there was a dust and gases, and these dusts and gases was due to gravitational pull was attracted by the sun, and by this attract gravitational pull they start rotating and resulted the formation of our solar system. And these theories, the most accepted among the theories is the Big Bang theory, Big Bang theory that was proposed by the Russian, that was proposed by in 1950s and 1960s and validated in 1972. What Big Bang says? Big Bang says there was a tiny ball of gases. There was a tiny ball of gases, and this tiny ball of gases exploded. And when this explosion of the tiny ball of gases result, जब ये गैसेस एक्सप्लोड हो गए, बाहर आ गए, तो इन्होंने इस सन के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू हो गए, ये गैसेस कंडेंस हो गए एंड रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो ये बिग बैंग थ्योरी अगर आप देखोगे, ये जो पहले थ्योरीज थी इनमें मॉडिफिकेशन करते करते एक अल्टीमेट थ्योरी आ गई दैट वाज मोस्टली एक्सेप्टेड, दैट इज बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी कि बिग बैंग मीन्स एक्सप्लोजन, बिग एक्सप्लोजन हो गया and the gases came out from the sun and resulted the formation of our solar system. And this is all about the theories of the origin of earth. कभी आ सकता है ये कौन सी थ्योरी क्या है. Now we will in the fundamentals of earth we will start the rotation of earth. Rotation means this is our earth, it has an imaginary line that is called as axis, and this axis and this moment of this earth, spinning of this earth around this axis is called as rotation. Spins on an imaginary axis from west to east. So yaad rakhna, this earth rotates from west to east and makes the day and night in 24 hours. It is called as rotation. Okay. The speed of the speed of this rotation is 1667 kilometers per hour and decreases towards poles. And जब दिस इज सन, यहाँ पे आपको इक्वेटर सबसे ज़्यादा स्पीड हो गई, जो ही आप पोल्स पे पूछोगे आपकी इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. It results in the formation of days and nights. So the days and nights are equal at the equator, and जो ही आप पोल्स की तरफ जाओगे तो डेज एंड नाइट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. ठीक है. एंड रिवोल्यूशन मीन्स अर्थ's मोशन अराउंड द सन. जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है इन 365 days and some hours, we called that as revolution, and this result is the formation of seasons. अब देखिए, जब ये सन रोटेट करता है जब ये अर्थ रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द ऑन द 21st of March, यहाँ पे देखिए सन की रेज पूरे यूनानिमसली ओवर द पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी रहती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली पड़ जाती हैं सन की रेज ऑन 21st of March. तो 21st of March we have equal days and nights, and when the days and nights are equal on 21st of March, we called that as an equinox, and this equinox 21st March is called as vernal equinox. This equinox is called as vernal equinox. याद रखना, on 21st of March the days and nights are equal and we call it as equinox, and this equinox is called as vernal equinox. जब हम मार्च से यहाँ की तरफ जाओगे,
दिस इज मार्च, अप्रैल एंड मई। जब जून पूछोगे तो आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अब सन रेज पड़ जाती हैं। अब जो सन रेज जो है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ओब्लीग है। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में समर होगा। ऑन 21 जून यू हैव समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जब समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होते हैं उसको हम समर सॉलिस कहते हैं। एंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं तब साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट होता है। याद रखना, ऑन 21 जून दिस इज कॉल्ड एज समर सोलिस। याद रखना, ऑन 21 जून द सन रेज और परपेंडिकुलर और डायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर होता है, तो समर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज समर सोलिस। जब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट नाइट होगी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होगी। ठीक है, तो ऑन 21 जून जब हम सितंबर की तरफ आते हैं, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ऑन 23 सितंबर अगेन सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली होती हैं। तो वी अगेन हैव द इक्वल डेज एंड नाइट्स एंड दिस ऑन 23 September द इक्विनॉक्स ऑफ 23 September is called as autumnal equinox. So we have two equinoxes. One is vernal equinox on 21st of March and 23rd of September is called as autumnal equinox. और जब सितंबर से हम दिसंबर की तरफ आ जाती हैं अब सन की रेज साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाती हैं। अब जो यहाँ पे सॉलिस होगा दैट इज कॉल्ड एज विंटर सॉलिस। इट इज 22 December और साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। और सम मीन्स जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है और 22 December में साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। दिस इज ऑल अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। याद रखना, इक्विनॉक्स, वर्नल एंड समर सोलिस याद रखना। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम जोन्स। प्राइम मेरिडियन आपको पता है, दिस इज ग्लोब अर्थ। The 180 degree longitude is called as prime meridian। इसी से हम टाइम को मेजर करते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 minutes per degree लैटिट्यूड। याद रखना, अगर ये एक लैटिट्यूड है ये दूसरा लैटिट्यूड है, बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स देयर इज द डिफरेंस ऑफ 14 मिनट्स। ठीक है, तो याद रखना इससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। इफ दिस इज वन लैटिट्यूड हियर इट इज 80 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, नॉट लैटिट्यूड, सॉरी, दिस इज लॉन्गिट्यूड। दिस इज 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे टाइम है 2 hour 2 PM। एट 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड द टाइम इज 2 PM। आपको बताया जाएगा। नाउ आप मुझे बताओ 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा। एट 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड द टाइम इज 2 PM एंड व्हाट विल बी द टाइम एट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप क्या करोगे? फर्स्ट यू विल सी द डिफरेंस, दैट इज 120 minus 80, it is 40. So there is a difference of 40 degree longitudes between this longitude and this longitude. There is a difference of, this is 80 degree and this is 120 degree. There is a difference of 40 degrees. मैंने बोला पर डिग्री लैटिट्यूड क्या, पर डिग्री लैटिट्यूड, जो पर डिग्री लैटिट्यूड 4 मिनट्स की डिफरेंस होगी तो इसको हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 40 into 4 इट इज़ 160. So there will be the difference of 160 minutes. So इस और इसके दरमियान, इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के दरमियान there is a difference of 160 minutes और 160 minutes in is 2 hours and 40 minutes. अब 2 PM को 2 hours and 40 minutes ऐड करो, it would be 4 hours and 40 minutes PM. So the time at this longitude at 120 degree longitude would be 4 hours and 40 minutes. ठीक है, सो इससे, इस लॉन्गिट्यूड से आप टाइम मेजर कर सकते हो। याद रखना, फिर से मैं बता दूं, इफ दिस इज 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
यहाँ पे हमें 4 बज गए, आपको बताया जाएगा 40 डिग्री लेटीट्यूड को बताओ क्या टाइम होगा। आपको पहले इनकी डिफरेंस देखनी है, 40 - 20 को इनकी दरमियान जो डिफरेंस है 20 डिग्री डिफरेंस है। तो पर डिग्री कितनी मिनट्स का फ़र्क रहता है, 4 मिनट। तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4 4 2 8 को 80 मिनट्स का फ़र्क है। इट इज़ 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो अगर यहाँ पे 4 बज गए, यहाँ पे 5 बज के 20 मिनट्स होंगे। So this is the time you can calculate, and this is all about the origin of Earth, the theories of origin, rotation, and revolution. Thank you very much.